So, like, I spent like 6 months for the pre of the film. And for me, it was very important phase. The most important phase was pre. During that, when I was selecting the crew, because each crew was also casted by me, so I was very consciously aware कि मुझे किन लोगों के साथ कैसे काम करना है, तो वो इस cause और इसके साथ भी फील करें और टीम का हिस्सा हो। सॉरी, आपकी बात कर रही हैं, थोड़ा ये भी बता दें लोगों के लिए, मुझे तो पता है, लेकिन you're not a filmmaker by profession. No, he's not. मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। जी, आप असल जिंदगी में क्या करते हैं वो ही बता दें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता हूँ फ्रॉम लास्ट। मुझे लगता है उसने मुझे बहुत हेल्प की, बिकॉज आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर, क्वालिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजर, and working is built up with a multinational, and this is my passion. I did theatre for more than 15 years with Ajoka, and then filmmaking was always my passion. So I'm not like trained filmmaker or self-taught and very passionate about it. So that's why it happened. So coming back to that, तो pre मुझे लगता है बहुत strong थी, जो आपने वो बात भी की कि women, I consciously make this decision कि खवातीन हो। और मुझे इंटरेस्टिंग, जब मैं अप्रोच कर रहा था लाहौर में, तो बहुत सारी खवातीन हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है NCA, BNU इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से बच्चे निकल रहे हैं, they want to do good work. So why not bring a lot of new people, जिन्होंने एक फिल्म की है या कहीं ad assist किया है या कुछ है, so bring them a lot of people and they have very good positive energy, want to associate with the film, the kind of film we are making. So आहिस्ता आहिस्ता बनी। और फिर हमने जो एक, मुझे लगता है बहुत जो अच्छी चीज की, हमने सबसे पहले शुरू किया एक्टर्स के साथ वन ऑन वन। आई डिड मेक कॉन्वर्सेशंस, लॉट ऑफ सेशन ऑन फोन ऑब्वियसली। देन आई मेक हमने कॉस्ट्यूम कोई 3 महीने पहले डिजाइन कर लिए फिल्म्स के शूट से, and then bring them all, have a detailed look test with a lot of options, that how the hair will be, how the clothes will be, so a lot of like work on that. So even makeup, everything, styling, all, even with scenes, we read scenes कि अच्छा ये scene है तो इसमें there are a lot of color palette involved. हर character का एक color palette अपना है, जो कि फिर एक फिल्म का एक color palette है जो उसके साथ integrate होता है। मतलब sets का भी एक color palette है, तो it's very, अब छोटी-छोटी है, there are a lot of Easter eggs in this, तो आपको शायद पता ना चले, लेकिन मैं चाहता था कि ऐसी क्रिएटिविटी हो। Also we had an orientation class now. So that was, I think, an amazing idea. मैंने कभी पहले इस तरह किसी सेट पे नहीं किया, मैंने कुछ 7-8 फिल्में की, but हम लोग एक दिन पहुंचे and everybody was in this huge lounge, his house lounge. We were all sitting. There was Nighat Ji, there was I, there was each person from the production. एक बंदे का introduction हुआ. So हमें सबको पता था कि who's doing what. Right. If Isha is a showrunner, so I knew because he introduced her. Each one of us stood up and said, "Ji, I'm Amna Ilyas. I'm a part of this film, and I'm playing falana role." So I think the leadership quality that Shoaib sir and Nighat Ji have, I think it's really commendable. Amazing. Thank you. It means a lot. Amazing. We try to make it like as standard, international standard as possible. Right. So coming to my final question, you're from the business community as well, or आप electrical engineer हैं. Of course, you're a big star. Is this film going to make money? And because at the end of the day, film का purpose भी हो, social issue भी आपने बताना है, लोगों को कहानी भी बतानी है, मगर at the end of the day अगर film पैसे नहीं बनाएगी और producer पैसा नहीं बनाएगा, director को नहीं मिलेगी, या actors को fee नहीं मिलेगी proper, तो वो आइंदा नहीं इतने interested होंगे ऐसा project करने में. So is this going to be a financially lucrative film, do you think? So far मुझे लग रहा है कि sorry, एक और इसके साथ associated सवाल ये है कि ऐसे subjects जो होते हैं, बहुत लोगों को के जहन में ये होता है कि there is some kind of international funding going into the film, जो कि होती भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, but is there a funding coming into this film, and do you think it's going to make money? I think it's going to make money because as a producer, as a business person, जो product हमने बनाया है, हम तो चाहते हैं कि वो बनाए. So I have positive outlook and so have they. And रही बात फंडिंग की, no, this is like personally funded by me. मैंने खुद इसको फंड किया है because I wanted to put my money where my mouth is. I didn't go out seek for money, nothing. Nighat, would you like to reveal a ballpark? Not exactly, but it's a small film, but it's an important film. So how much money goes? What is the budget of a film like this? I'll give you an estimation. So you know this international standards, SAG, moderate, low budget, somewhere around $700,000 to $1 million. Right. It's in that category. Right. Yeah. Okay, that's pretty good. I mean, for Pakistani standards. Yeah, from Pakistani standpoint, it's like
a good budget film. It's a good budget film, right? ये लो बजट नहीं है हमने इसलिए कि मिड टियर कैसे नहीं उससे थोड़े से ऊपर है Yeah. इसलिए कि there are lot of characters, there are lot of locations, there are lot And we of had to create the era of 1990s. का That era was create so करना was a task. expensive. Absolutely. ठीक है सो वो जाहिर है कि अब क्योंकि कहानी ऐसी है ये लगता है ऐसे कि इट्स लुक अ बिट रॉ बट एक्चुअली उसमें बहुत difficult एफर्ट to- है उसको क्रिएट करने में वो अच्छा, rawness मेरे दिखाने जैसे के लिए। नॉन नंबर बंदे को बता दें $1 million रुपए कितने बने आजकल के कन्वर्जन में So- ताकि लोगों को भी जरा आसानी हो कितने हाउ मच मनी आर वी टॉकिंग अबाउट 10 लाख अच्छा कर लेंगे हिसाब बाद में Yeah. बाद में नीचे हिसाब tag करेंगे, लगा but yeah, I know. tag लगा देंगे Around 700,000. 700,000. अब मिलियन बता देंगे लोग बोलेंगे oh my god ये क्या Right. So I tell you one story. It's really funny. My husband says to me that I see a very famous poor woman because I put all of my money into this. So that's ठीक my है, story. ठीक I'm है। like कोई बात नहीं. I at least said I wanted to say. हाँ You know, I put my money where my mouth is, and that's the end of the day. बिल्कुल And I'm happy. I don't owe anyone anything. Right. I don't know if it's better to be rich or famous, but yeah. Yeah, दोनों I हो don't तो know. अच्छी बात है। I think दोनों अच्छी बात दोनों है. अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि ये फिल्म इसलिए बिजनेस करेगी क्योंकि एक फिल्म तो अच्छी है ये जो हम बात कह रहे हैं और हमारा बिलीव इसलिए कि हम खुश हैं फिल्म से हम सेटिस्फाइड हैं आप कॉन्फिडेंट हैं कि यार हमने चीज़ अच्छी बनाई है अब ये ठीक है ऑडियंस के भी एक रिएक्शन होता है विच इज़ फेयर और अगर कोई क्रिटिसिज्म भी आता है हेल्दी या नॉन हेल्दी भी इवन तो वी विल एक्सेप्ट इट वी आर रेडी टू एक्सेप्ट इट बट हमें ये लगता है कि ये इसलिए मुझे स्पेशली ये लगता है कि इसलिए बिजनेस करेगी क्योंकि ये हम कुछ मुख्तलिफ अंदाज से एक बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है जो कि मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को देखना चाहती है वो अपॉर्चुनिटी आप नहीं देंगे तो कैसे देखेगी तो हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो प्लीज देखें आके बिल्कुल Amna, what would you say that I think that me as an actor and also as a part of the society as just an individual, I think I crave for good films. Yeah. And I've heard like my friends and everyone I talk to, like even while giving interviews or like even if when I meet people, like, you know, if I have like a public event or something, people are, I think, craving for good films, for good content. And Gunjal has everything that a sensible person who likes watching cinema would watch this film, you see. If a person likes watching films, वो उनको ये film अच्छी लगेगी. Right. So I think that it's I am confident, बस अल्लाह इज्जत रखे अभी. I'm actually very confident about this film. Right. It should do well. It will do well. Inshallah. Right. So good luck to you guys. Thank and you. I hope it does. We'll see you and I will be watching it. And also we have Ahmed Ali Akbar in it, so we have Resham in it. So You have Resham And we have we're really Amna banking Riyaz on in that. it. Yeah. No, you are there. No, I'm kidding. Of course, मैं अपना तो नहीं कह सकती. Resham's हाँ, last मैंने कह outing दिया, was we have the Amna legend of Riyaz Mawla in it. Jet. Although छोटा सा उनका रोल था उसके अंदर लेकिन Yeah. फिल्म ने तो हिस्ट्री With a proper role 15 years here coming back after Yeah. 15 years here doing this right, film. yeah. But they set the tone of the film. Like the first scene, हाँ. Resham and Babar Ali, हाँ. they looked very good. Oh, absolutely. I love that scene. yeah. Absolutely. Yeah. Oh, they were meant for those. Yes. It was amazing. Something. Absolutely. So guys, good luck and thank you for Thank you. giving us so much time today. Thank Thank you for और having अल्लाह us. करे कि आप सब बहुत बनाते रहें अच्छी फिल्में Inshallah. और ये सिलसिला जारी रहे बिल्कुल बहुत